It's officials of Cooperative Ministry, members of the media, and dear friends. At the outset, I would like to remember and pay my respects for those who have made all of us come together since several decades, for whose service the Federation is privileged to have the guidance and support of people like Honorable Srimati Pratibha Patel, who served the country as President of India, Dr. S.S. Sisodia, who was Chairman of NAFCB for almost 15 years, and then he was also Chairman of the NCUI. Professor M.S. Rege, who has dreamt of this federation, Professor M.S. Rege, and Sri Suresh Prabhu, and you all will be surprised, some of the new people will be surprised, Sri Amit Shah ji, Sri Vijay Kumar, Sri K.K. Sharma, whose leadership and encouragement continue to inspire and strengthen our collective work. When we as cooperators come together for a cause that is close to our hearts, the atmosphere becomes refreshing and uplifting, like the fragrance of jasmine in a garden. We have gathered today with that spirit of purpose and fraternity. Over the next 2 days, pooling our collective experience, we will deliberate on issues before us and seek constructive guidance from the government and the regulator. It is very encouraging that Ministry of Cooperation is actively engaged in understanding the challenges of urban cooperative banking sector and working with NAFCB to address them with the Reserve Bank of India. Several long-pending issues have already seen progress. However, this is only the beginning. Many significant matters still require sustained and strategic engagement. Honorable Union Home Minister and Cooperation Minister, Shri Amit Shah ji, is no stranger to the urban cooperative banking sector. Having served on the board of NAFCB in the early of 2000 and having long been associated with Gujarat Urban Banks Federation and cooperators, his deep familiarity with the sector is a guiding strength for policy direction. It is reassuring that the ministry recognizes the need for balanced geographical expansion of urban cooperative banks across regions and states, rather than their concentration in only a few states like Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu. Equally urgent is the need to reconsider the current approach of closing down banks solely on the grounds of unviability. Ensuring timely corrective action is as much the responsibility of the regulator as it is of the board and management. I recently came across an article by Swaminathan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India,
detailing how Yes Bank, a private bank once on the verge of collapse, was revived through the coordinated efforts of RBI and consortium of public sector banks led by State Bank of India. When systemic stability is at stake, institutions rise above competition. Similarly, a series of closure of small urban banks poses its own systemic risks. Therefore, Reserve Bank of India must adopt a proactive approach to nurturing incipiently stressed urban banks and facilitating collaborative revival models. Whatever is applicable to private sector or joint sector should also be applicable. The same approach is to be applicable to the cooperative sector. Before the Banking Regulation Act 2020, the amendment in fact, which came in 2020, limited regulatory powers were often cited for delayed intervention. The sector hoped that once the RBI had full supervisory authority, it would take timely preventive steps. Yet, license cancellations have increased, especially after amendments to DICGC. Act enabled immediate payouts upon imposition of all-inclusive directions, leaving banks with no pathways to revival. Today, more than 20 such banks wait for closure without hope of rehabilitation. This closure of revival avenues must be addressed urgently at the highest levels. Another issue requiring the attention of the Ministry of Finance is Section 80P, introduced in 2006. Of course, Honorable Present Cooperation Minister and Home Minister has earlier made a lot of efforts to get revised this ATP4. This brought cooperative banks under the income tax net. The economic and social value delivered by cooperative banking institutions to weaker sections far outweighs the revenues gained through taxation. This merits reconsideration. The Ministry of Cooperation has initiated significant reforms to strengthen the cooperative ecosystem, including revitalization of PACs and the establishment of 3 new national level cooperatives. At this point of time, I would congratulate and also convey our gratitude to Honorable Cooperative Minister for having given a guidance and a strength for establishment of NUC FDC. While congratulating Mr. Jyotindra Mehta, Chairman of NUC FDC, for having mobilized 300 crore of equity by now, which is now to start the financial operations, which has come out with so much of new products for technology. NUC FDC can see the light of the day only because of the great efforts of Jyotindra Mehta, Lakshmi Das, Mr. Milind Kale, Mr. Modit Verma, and so many other senior cooperators. More than that, it has become possible because of the moral strength and a big encouragement given by our Home and Cooperative Minister, Honorable Shri Amit Shah ji, for whom
I am very grateful to him, and I thank on behalf of all of you. Friends, the government is now positioned to provide comprehensive technological, fund-based and advisory support. Under its dynamic leadership and experienced board, I am confident we will achieve sustainable annual growth of at least 10%. Looking ahead, the urban cooperative banking sector must prepare itself for realities of 2030, a future where financial inclusion must go hand in hand with technological advancement. Our vision must focus on strengthening governance, deepening professionalism, adopting secure digital platforms, expanding products such as MSME credit and micro-insurance, and learning from global cooperative models in Germany, Japan, and Netherlands. A progressive policy framework rooted in trust, transparency, and innovation will ensure the urban cooperative banks remain resilient, competitive, and profoundly people-oriented. Friends, I would like to congratulate our President of NAFCB. Even at this age and inconvenience of health, he was so active, and his efforts, in spite of his inconveniences, he made this organizing of this Kumbh so successful, and I express sense of gratitude to him. On one hand, on cooperative side, if Lakshmidas ji has taken so much of pain and tireless efforts, I would also congratulate Mr. Jyotindra Mehta, who is affectionately known to us as Mama, including Amit Shah ji. I congratulate him for making this international conference happen and NUC, FDC see the light of the day. Our Vice Presidents, Mr. Modi Tuama, Mr. Malin Kale, and our NAFCB directors are all deserve congratulations. I am sure our NAFCB, our urban banking sector, which was some years back being discouraged for anything good, now will be encouraged to grow, will be encouraged to strengthen ourselves and make ourselves to come on par with private, joint sector, nationalized banks. I once again wish you all well. Thank you very much. पहले भी बहुत बार अनुरोध किया गया, कृपया जिसका भी मोबाइल बीच में बज रहा है उसे और बाकी भी इंश्योर कर लें कि आपका मोबाइल फोन जो है साइलेंट मोड पर है। आभार बहुत बहुत माननीय श्री एच के पाटिल जी का। देवियों सज्जनों, नाफकब ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से इस स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। मंचासीन अन्य विभूतियों से भी अनुरोध है वे इस शुभ कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर कोऑप कुंभ 2025 का जो थीम है डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज, इसी विषय को केंद्र में रखकर इसे तैयार किया गया है, जिसका विमोचन मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से हो रहा है। देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के विजन से प्रेरणा लेते हुए एनयूसी एफडीसी ने दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर
रिमोट का बटन दबाकर NUC FDC के इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ अपने करकमलों से करने की कृपा करें। भारत ने UPI के साथ एक ऐसी डिजिटल क्रांति लिखी है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज UPI ट्रांजैक्शंस महीने में 1200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इस डिजिटल पेमेंट के दौर से अभी भी दूर हैं। इस चैलेंज को समझते हुए NUC FDC ला रहा है सहकार DigiPay, एक केंद्रित UPI स्विच जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सीधे UPI नेटवर्क से जोड़ेगा। ये पूरी तरह RBI और NPCI के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। सहकार DigiPay में UPI ट्रांजैक्शंस के फ्रॉड और जोखिम को रोकने के लिए एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम भी शामिल है। ये सिर्फ एक पेमेंट स्विच नहीं, बल्कि भारत के कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए एक साझा कदम है। जिन UCBs के पास मोबाइल ऐप्स नहीं हैं, उनके लिए सहकार DigiPay ऐप लाई जा रही है। ये ऐप भीम UPI का उपयोग करेगी। इस पहल के साथ अन्य UPI स्विच सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अपनी प्राइसिंग और सर्विस क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। सहकार DigiPay, NUC FDC का डिजिटल पेमेंट स्विच। आज जब भारत डिजिटल क्रांति को अपना रहा है, सहकारी बैंक आत्मविश्वास के साथ एक नए युग में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा युग जो गति, पारदर्शिता और नवाचार से परिपूर्ण है। प्रस्तुत है सहकार डिजिलोन, एक परिवर्तनकारी डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म जो सहकारी बैंकों को अत्याधुनिक तकनीक और सरल ऋण प्रक्रियाओं के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। दिखाए गए आइकनों पर क्लिक करके आप अपनी पसंद की कोई भी लोन जर्नी चुन सकते हैं। 1470 से अधिक UCB, 11,500 शाखाएं और लगभग 9 करोड़ ग्राहक के विशाल नेटवर्क के साथ सहकार डिजिलोन सहकारी ऋण व्यवस्था की पहुंच को और विस्तारित करेगा। आसान डिजिटल KYC, रियल टाइम धोखाधड़ी पहचान और स्वचालित ऋण मूल्यांकन के माध्यम से आपको मिल पाएंगे सटीक और बुद्धिमत्तापूर्ण ऋण से जुड़े निर्णय। मजबूत डेटा सुरक्षा, अनुपालन और नियामकीय पालन को अपने मूल में रखते हुए सहकार डिजिलोन हर सहकारी संस्था और उसके ग्राहकों के लिए पूर्ण विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। NUC FDC, भारत का अपना अम्ब्रेला। आप सभी को इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बहुत बहुत बधाई। देवियों सज्जनों, आभार मुख्य अतिथि महोदय का इनका शुभारंभ करने के लिए। देवियों सज्जनों, आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में आज देश में सहकारिता क्षेत्र को न सिर्फ पुनर्जीवन मिला है, बल्कि ये क्षेत्र विकसित भारत की यात्रा में अपनी सशक्त भूमिका निभाने के लिए तैयार भी है और तत्पर भी। ये 2 दिवसीय आयोजन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आइए आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ आपकी तालियों के साथ उनसे निवेदन करें, इस अवसर पर वे अपने संबोधन के लिए पधारें और हम सबका आज पुनः इस अवसर पर मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान HK पाटिल जी, कानून और संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री कर्नाटक सरकार, और सालों से पाटिल साहब NABCP का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश भर की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो संगठन है उसके वो धुरी रहे हैं। डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, सहकारिता सचिव भारत सरकार, श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी, बहुत पुराने NABCP के न केवल नेता है, NABCP को चलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ आया हूँ।
लक्ष्मीदास जी, नैपकैप के अभी के अध्यक्ष, और इनके ऐसे स्वास्थ्य के बावजूद उनकी गतिविधि और उनकी एक्टिविटी और जोश देखकर लगता है ऐसा हौसला भगवान सभी को दें। श्री मिलिंद काले जी, उपाध्यक्ष नैपकैप, और आज इस सहकारिता कुंभ 2025 में आए हुए देश और दुनिया के सभी सहकारी नेताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज अर्बन सहकारी बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी के ये सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नैपकैप ने किया है। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। ये कुंभ 25, जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का सहकारिता कुंभ निश्चित रूप से कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ आएगा, जो हमारे सेक्टर को आगे ले जाने के लिए और मजबूती से गति बढ़ाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं हमारे देश की 2 जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफको दोनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफको को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। मैं तो गुजरात से आता हूं। बचपन में छोटा सा बच्चा था, तब से डेयरी सेक्टर ने गांव के किसानों को और गरीबों में क्या जादुई परिवर्तन उनके जीवन स्तर में उठाने के लिए किया है, उसको देखा हूं। परंतु आज श्वेत क्रांति की वाहक अमूल बनी है और 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्रामीण समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से देश भर में 3 करोड़ लाख लीटर दूध रोजाना कलेक्ट करने का काम अमूल करती है और 24-25 में अमूल का टर्नओवर 90,000 करोड़ को पार कर गया है। मित्रों, ये बताता है कि 36 लाख किसान, जिसमें 65% से ज्यादा महिलाएं हैं और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, वो इकट्ठा होकर 100-100 रुपये की पूंजी लगाकर